जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्सवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो The Shiv Tandav by Kalashri Dance Institute. What an incredible job. They deserve another round of applause, everyone. Now, this event could not have happened without our supporters. So I'd like to name a few. One being Star Property Group and the other being Acorn Lawyers. Thank you for your contribution and support in pulling this event together. Up next, we have the students of the Nitralaya Dance School. They will be showcasing various art forms from Kerala. Who is from Kerala here? Give us some noise. Incredible. There will be a fusion song showcasing the martial art form Kalariyapattu with Kathakali, which is a classical dance form, Moniyattam. Lots of big words, but an even bigger performance. This will be followed by a semi-classical dance to the folk song describing the nature's beauty of Kerala, which is described as God's own country. So everyone, get ready for the next performance. अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे अतिरमणीयं तव तिरुरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे कुण्डलमण्डित तेजस्वरूपं पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे मम मानसमोरु पूजा पुष्पं तिरुमुन्बिलर्पिच्चिडुन्ने कैकोल्लेणमे कृष्णमुरारे पूर्णत्रयीश हरे हरे कृष्णा पूर्णत्रयीश हरे അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
അടിപണിയുന്നഖിലേശ നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ Everyone, this is what being Indian is all about. Look at these wonderful dances we have on show. You did a fantastic job.
Oh my That God. was incredible. A round of applause, guys. A round of applause for you guys. Well done. Absolutely. Round That's of the applause. Monday effect. Up next, the next performance has irresistible catchy rhythms, electrifying energy, and power dance moves. The song is not only a global dance anthem that has been loved by young and old, but has bagged the prestigious Oscar Award. Today's routine is choreographed by Vihang Nikalje, Darshan Pawar, and Sohini Banerjee, and performed by Bolly Crew. You guessed it. Get ready to witness the magic of Natu Natu. Put your hands together, everyone! పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు ఇర్రు సెప్పులేసుకొని గర్వసామి Ladies and gentlemen, well done. He is not far away at all. But for the moment, take this in, ladies and gentlemen. It's one of our final performances here tonight. A little bit about the Holia Dance Academy. It tells a story of the newborn Durga, who led a battle against Mahishasura, a deceitful demon. Whilst riding a lion on the last day of battle, Durga killed Mahishasura. Thereafter, she was named Mahishasura Mardani, the killer of Mahishasura. This divine and beautiful hymn was composed in order to praise the goddess for her merciful nature on humanity. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Holia Dance Academy.
कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते देवी विष्णुरूपेण देवी शक्तिरूपेण देवी लक्ष्मी रूपेण देवी शान्तिरूपेण शान्तिरूपेण नमो नमः नमो नमः नमो The Holia Dance Academy, thank you so much. Look how gorgeous they look. Incredible stuff, ladies. You were fantastic. One more time, a warm round of applause for the Holia Dance Academy. Ladies and gentlemen, we are in for a fantastic night. Thank you all for being here. This night could not have occurred without all of our fantastic supporters, whom we so appreciate and whom we are so grateful for. I'd like to thank Acorn Lawyers, New India Assurance, Canberra Business and Technology College, Trinity Institute Australia, Link Group, Star Property Group, and MNB Variety Imports. Thank you for your support. This event would also not be possible without the support of VFS Visa Services, Western Union, Jodhpur Designs IT Solutions, Astral Skills Institute of Australia, the Education Centre of Australia, and Health 360 Degrees. Last but not least, our MSS Security, one of the biggest security companies in the world. Another great Bank of India, the Union Bank of India, the Bank of Baroda, the State Bank of India, Tata Consultancy Services Australia, and last but not least, the Mahindra Group. Thank you, one and all. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for our wonderful supporters. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now have a very short 15-minute break. So feel free to use the amenity sides or go to the bathroom. But remember, we are not far away from seeing the man we've all come to see here. So please give a round of cheers. But Rithi has something to say and share with you all. I do have something to say and share with you all. I have written a small poem. Whether it is good or bad, I would love for everyone to cheer and applaud me. So, मेरे प्यारे दोस्तों, सुनियो. एक प्यासा ही काफी है सागर तक जाने के लिए. एक हवा का झोंका ही काफी है ठंडक फैलाने के लिए. एक चिंगारी ही काफी है उत्क्रांति लाने के लिए. ऑस्ट्रेलिया, आपका देश प्रेम ही काफी है मोदी जी को आने के लिए. Everyone, we will see you after the break. Enjoy. Please enjoy. COVID in China. Threat of global pandemic. The evolving situation in China. The looming threat of war. Horrifying video. And climate change hitting the planet faster than ever. Cyclone Ilse is the most powerful. The world faces multiple challenges today. Amidst these rising global upheavals and uncertainties, there is one country which is emerging as a beacon of hope, stability, optimism, calm, and growth. That is
India. India a bright spot. India is providing 15% of global growth in 2023. This is a story of doing things very differently and building a much better story of growth and development. I think India's out in front on that. The clarity and commitment of Prime Minister Modi is critical. This is the growth and development story of this century. The production capacity of India is one of the best assets the world has today. You know, India did an amazing job not only making vaccines, but also getting them out to people. India is also the future. And the future is going to have an Indian fingerprint on it for everyone, everywhere. When you look at what's happening here in India today, you can see a country that is being rebuilt in a very, very exciting way. Prime Minister Modi, most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. What drives today's India? It is the ever-growing trust of 1.4 billion Indian citizens in democracy and institutions. The mother of democracy, India, is on its way to cementing its status as a global powerhouse with deepening democratic values. The country boasts a dynamic economy, a robust democracy, and a lively society that prioritizes development through unity, inclusivity, and sustainability. आज भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों के संकल्पों से, उनकी भागीदारी से भारत के प्रयास आज जन आंदोलन बन रहे हैं। The world's largest democracy, India, today is constantly witnessing record participation election after election. What makes Indian democracy unique is the increase in women's participation in recent years, to the point where the number of female voters exceeded that of male voters in many states. The faith of people in institutions is higher than ever, and they are optimistic about their future and the future of India. This is reflecting in people's participation and contributions in making national agenda successful, be it the National Cleanliness Campaign or be it the campaign against single-use plastic. Guided by the belief of Vasudhaiv Kutumbakam, that is, the world is one family, India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, is emerging as a guiding light, providing leadership and direction to the world. In the melody of hundreds of its languages and dialects, India lives as one. India grows as one. India celebrates as one. India is leading the world when it comes to innovations. Powered by the intent and intellect of India's talented youth, India has witnessed a massive leap of 81 in 2015 to 40 in 2022 in the Global Innovation Index. India is the third largest startup ecosystem and is home to over 100 unicorns. Since 2014, the resolve of Digital India has ensured digital services for all, including e-governance, e-commerce, and e-learning, and transformed how people interact with each other and the government. The case of India, it is actually quite impressive. It's a logistical marvel how these programs that seek to help people who are at low income levels reach literally hundreds of millions of people. One thing that is striking is the use of the unique identification system, the Aadhaar. India's digital public infrastructure is also cutting edge, with the Unified Payments Interface, UPI, enabling digital payments nationwide. It is the first in the world for digital transactions, single-handedly accounting for over 40% of the world's online transactions. Its success
prompted tech giant Google to recommend a UPI-like platform to the US Federal Reserve for digital payments. The India stack, starting with Aadhaar and UPI, Unified Payments Interface, so that everyone can make digital payments, is a remarkable achievement on a global scale. There's been no financial innovation of that scale and speed achieved in any other country. India's digital prowess is evident from the efficacy of the CoWIN platform. It was CoWIN that ensured that India's fight against once-in-a-century pandemic was collective and tech-enabled. It was CoWIN that facilitated the world's largest and fastest vaccination drive in India. Many countries also benefited by adopting India's CoWIN. The financial inclusion of over 477 million people with the opening of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana bank accounts has provided access to banking services, credit and insurance to people previously excluded from the formal banking sector. Direct benefit transfers to the bank accounts of millions has redefined the relation between people and the government. Real progress is one where everyone participates. India has graduated from women development to women-led development. The Prime Minister's social initiatives such as Beti Bachao, Beti Padhao have promoted gender equality, improved the sex ratio at birth, and empowered girls. India was far ahead of the game, and you continue to show the world exactly what investing in women can do. Making sure that cash transfers get directly into women's hands is a textbook example of what we call gender intentional policymaking. A testimony to the change girls and women are witnessing in today's India is the improved sex ratio at birth in decades, which has risen from 903 to 1,020 girls per 1,000 boys between 2014-2015 and 2019-2021. From the Permanent Commission of Women in the Armed Forces to have the highest number of women pilots in the world, from a significant percentage of women house owners, the highest number of women beneficiaries of startup and entrepreneurial loans and schemes under the Micro Units Development and Refinance Agency, Mudra, to providing security, such as the abolishment of triple talaq that has granted equality to Muslim women. A new vigor defines India's Nari Shakti, women power. Padma Awards have honored individuals who have significantly contributed to society, regardless of their social status or background. Transcending the dilemma between economy and ecology, India is taking the lead in promoting green economy, where, as the fastest growing economy in the world today, it has also witnessed remarkable increase in green cover as well as the use of renewable energy, and is ensuring a healthy ecosystem for animals and a better planet to live in. Its share of non-fossil fuels in total installed capacity grew from 16.25% in 2014 to 43% in 2023. That accounts for 40% of its power generation. India is leading the fight against climate change with its commitment to reduce its total projected carbon emissions by 1 billion tons from now to 2030. It is on the path of achieving the target of net zero emissions by 2070, as declared by Prime Minister Modi at the 26th session of the Conference of the Parties. आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। आज आवश्यकता है माइंडलेस
और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। France looks forward to working with India to make this initiative a success. We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership. India has been very active in World Cleanup Day. One sun, one world, one grid, one Narendra Modi. New India symbolizes speed and scale. In just 9 years, India has constructed nearly 30 million homes for the poor, electrified all its villages and towns, distributed nearly 95 million free LPG cylinders that have liberated women from smoke-laden kitchens, constructed 116 million toilets that has made India open defecation free, provided more than 110 million tap water connections to homes, and most importantly, delivered a comprehensive universal health insurance for over 220 million beneficiaries, establishing roads, highways, metro, and high-speed trains at a speed highest in the history of independent India, tells the story of New India's ability to not only dream big, but also to deliver on them. India's achievements aren't limited to her. Its commitment to making the world safer remains steadfast. Its belief in the world being one unshaken. When the biggest crisis in over a century engulfed humanity, India emerged as the world's pharmacy. If India provided free made-in-India COVID-19 vaccines to nearly 1 billion people at home, it supplied more than 110 million vaccine doses to 97 countries. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world ಲಲಿತಾ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ 58,000 ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೊಡುವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ ತರ ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ನೀವೇ saber que la India, lejos de ofrecernos en venta, nos ofreció inmediatamente una asistencia de 200,000 dosis que van a ser 100,000 vacunas que vendrán a reforzar a la primera línea de nuestro país. If at home, it provided free food grain to nearly 800 million people, it sent 1.8 million tons of food grain to countries worldwide to overcome the food shortage. Wherever there is a disaster, India is ready as the first responders. When a devastating earthquake struck Turkey, the Indian forces did a stellar job in sending its rescue teams with relief materials. Partnering with nations of the world on initiatives such as Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI, or creating collaborative platforms such as the International Solar Alliance, or launching the International Big Cat Alliance, IBCA, for the conservation of 7 big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma harboring our planet. India is working for the global good with friends far and near. This is an India where mere economic or technological advancements do not measure development, but rather by how it transforms lives and empowers all members of society, from the privileged to the most vulnerable and marginalized. India is bringing positive transformation in lives of 1.4 billion people. And when lives of 1/6 of world's people mark at the moment. You guys are doing an incredible job at the moment. So thank you all very much. For any of you who have just joined us and don't know who we are, I'm going to take this opportunity to introduce my beautiful co-MC, Deepti Bhatt. Put your hands together for beautiful Deepti. Deepti is passionate
She is an ambassador for Are You OK organization, and she is an absolute force of nature. I'm sure you'll join me in saying that she's been doing an absolutely wonderful job so far here tonight. One more warm round of applause for Deepthi. And before we introduce the other two boys up on stage, we might actually get your attention up to these wonderful screens up in the middle here that will be talking about the Hindu Education and Cultural Centre. The VTR packages are just being given. Okay, cool. Right? So just take a stand by and we're going to win. How's the Josh? Woo! Can't hear you guys. Once more. How is the Josh? Probably I'm louder than you. One last time. Bolo Bharat Mata Ki. We are a wonderful community, strongly growing in numbers, very strong in economics, very strong in business. The only community which contributes the least to the crime, the only community which blends with any country, wherever they go, they contribute to the music, they contribute to the taste, they contribute to the culture. The only area they don't contribute is a crime. So it's a wonderful contributing community. I'm proud to be a person of Indian origin. Am I not? Once more, am I not? Without the community support, this cannot happen. So I, on behalf of HCACC, I request all of you to do a research on this, go through the website and extend your wholehearted support. So with that, I conclude, but I would like to thank every one of you for your wonderful presence here. Once again, one last time, Bolo Bharat Mata Ki! Vande! Vande! Thank you! नमस्ते। अहो भाग्यम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्याः संस्कृतशाला परतया ऑस्ट्रेलिया देशं प्रति स्वागतं व्याहरामः। संस्कृत भाषा भावज्ञतां सूत्रीकृताः अभिनन्दनानि स्वागतं सुस्वागतं च। ಭಾರತದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗರೂ ನಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Namaskar Modi ji. We the members of the Kashmiri Pandit Association of Australia are grateful for your visit to our Karambhumi. We are thankful for your efforts, especially in the last 4 years, towards enabling our honorable return to our Janambhumi. We send you our heartfelt wishes for good health and a long life. Dhanyawad. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂപ്പുകൾ
സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള സൗഹൃദം അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർവാധികം ഊഷ്മളമാവുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാണ്. കേരളത്തിന്റെ വികസനങ്ങൾക്കായുള്ള അങ്ങയുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് നന്ദി. പ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सादर प्रणाम। आपकी छत्र छाया में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास हुआ है। नमामि गंगे, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और राम मंदिर निर्माण जैसे कार्यों की वजह से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सिडनीमध्ये राहणाऱ्या समस्त मराठी समुदायातर्फे आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करतो. आपल्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील 5वी मोठी अर्थव्यवस्था झाली, याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. ईश्वर आपणास व आपल्या संघास उत्तरोत्तर यश देवो आणि आपल्याला दीर्घ व निरोगी आयुष्य लाभो. தமிழின் பெருமையை இந்தியாவின் பெருமையாக உலகெங்கும் பறைசாற்றும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களே, ஆஸ்திரேலியா வாழ் தமிழர்கள் அனைவரும் உங்களை அன்புடன் नमस्कार आदरणीय मोदी जी. सिडनीରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ. ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ହେଉକି ଭାରତମାଳା ପରିକଳ୍ପନା ପରି ଅନେକ ବିକାଶ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ. ગુજરાતી તરીકે અમારા માટે એટલી ગૌરવપૂર્ણ વાત છે કે જ્યારે સિડનીના મેટ્રોપોલિસ મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત વડોદરા શહેરમાં બનેલા છે. તમે છેલ્લે 2014 માં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ 2023 માં આવી રહ્યા છો. અમને 9 વર્ષ રાહ જોઈ છે. અમે ઈચ્છીએ કે તમે વારંવાર આવો અને આટલા જ મુલાકાતથી અમે સૌ તમારું સ્વાગત કરીએ. मोदी जी नमस्कार हो. बाबा केदार कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे. जय भारत. নমস্কাৰ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। नमस्कार। आहंदे भारत के बाबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्वागत है। हिमाचल एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के सारे सदस्य मोदी जी खुआंदे ऑस्ट्रेलिया दौरे करने बड़े ज्यादा उत्साहित हैं। ये बड़ी उम्मीद लाते हैं भाई तुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन जो और अच्छा करने का प्रयास करने। धन्यवाद। जय ऑस्ट्रेलिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया प्रवासी बांगाली আপনাকে প্রণাম জানান। আপনাকে প্রধানমন্ত্রী পেয়ে ভারতবাসী তথা বাঙালি গৌরব অনুভব করে। আপনার সুশাসন, কুশল বুদ্ধি, অক্লান্ত চেষ্টায় ইউক্রেন থেকে বাঙালি তথা ভারতীয় ছাত্ররা নির্বিঘ্নে নিজের দেশে ফিরেছে। মোদি জি আপনার భారత ప్రధాని మోడీ గారికి సిడ్నీ తెలుగు అసోసియేషన్ సభ్యుల తరఫున ఆస్ట్రేలియాలోని తెలుగు వారందరి తరఫున సిడ్నీకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మా అందరి తరఫున మీకు మా హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Ladies and gentlemen, as it says on the screen, Australia welcomes Modi. We are Australian, we are Indian. Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Aussie, Aussie, Aussie! This one's going to be a little bit louder. India, India, India! India, India, India! Oi, oi, oi! India, India, India! Well done, guys.
There is going to be a counter up on the screen very shortly. Modi, Prime Minister Modi. There it is. It's on the screen. He is 52 minutes away. We are into the final hour. Thank you all for being here. Ladies and gentlemen, don't worry. Not only do we have Modi in the house in 52 minutes, we also have the Australian Prime Minister, Anthony Albanese, very shortly. This is live footage, ladies and gentlemen. That's our Prime Minister, Mr. Anthony Albanese, with our Foreign Minister, Penny Wong. Fantastic. How are you boys enjoying the performances today? I'm absolutely loving them. What was your favorite one, Wayne? I have to say, everyone has taken so much care. All of the beautiful dance moves, all of the dance schools have been incredible. But all the patriotism, the Bollyfit for me was a standout. How about you, Arian? Absolutely. Well, if you missed on any of the dances or want to recap, please feast your eyes to the screen and you'll see a highlights reel. Enjoy. वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् प्यारा प्यार का मार्ग हमारा ज्ञान हमारा लक्ष्य है एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् इस पल में हमें जीना है हंसना और मुस्कुराना है एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम्
एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। वन्दे मातरम् 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 वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। दण्डत् दिन्द दद्दि दण्णां दिन्द दद्दि दण्डत् दिन्द दद्दि दण्णां दिन्द दद्दि दिन्न दिन्त दिन्त दिन् दिन्त जुन्नुदक्किट दिन्त दिन् दिन्त जुन्नुदत्त दिन्त दिन् दिन्त जुन्नुदक्किट दिन्त दिन् दिन्त जुन्नुदत्त दिन्त दिन् दिन्त दिन्तक्किट दिन्त दिन्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 वसिष्ठवामदेव वन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि। तद्दित्तकदिन तदित्तकिटतकजं कृतकदत्तदिङ्किटकुतुं कृतकदत्तदिङ्किटकुतुं कृतकदत्तदिङ्किटकुत तदि 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 तङ्कटतकतकटतकतकदित्तकदिन तदित्तकिटतकजं कृतकदत्तदिङ्किटकुतुं कृतकदत्तदिङ्किटकुतुं कृतकदत्तदिङ्किटकदिं तकिटदिं तकिटदिं तकिटकदिं
దిత్రయం తక్కదిమ్మి తక్క చెడు తక్కదిమ్మి తక్క చెడు మహాకావ్య నాటకాదిత్రయం తక్కడ తిక్కడ తొంగిడ నంగిడ తక్కి టక్కడగడగడం మహాకావ్య నాటకాదిత్రయం తక్క తక్కిట దిమ్మి తక్కిట జున్ను తక్కి టక్కడగడగడం మహాకావ్య నాటకాదిత్రయం తక్కదిన్న తక్కిట తక్కదిమ్మి తక్కిట తక్క జున్ను తక్కిట తక్కిం కిటకు మహాకావ్య నాటకాదిప్రియం భూషితవాహన మోదక ప్రియమాకా గణపతిం మనసా స్మరామి మాతా గణపతిం మనసా స్మరామి వసిష్ఠ వామదేవాది వందిత వసిష్ఠ వామదేవాది మాతా గణపతిం మనసా స్మరామి మాతా గణపతిం We are one. Ding da ding da ding da da ding. Ding da ding da ding da da ding. Ding da ding da ding da da dum da da ka chendu ding da da ka chendu dum da da ka chendu kir da ka dum. Ta ka di ta ka chendu ta ka di ta ka chendu ta ka di ta ka chendu kir da ka dum. Ding da ding da da ding 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 da ding. Ta ka ding da 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 ka ding. Dum ding ta tang da ta ta ka dum 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 ta ta dum ta ding ta ta ding. Tatanga tatakradam tatanga tatakradam tatanga tadegedaka tatanga tadegedaka tatanga tadegedaka dim tadim 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 ta tadingedaka ta tadingedaka taga tadingedaka taga tadingedaka taga tadingedaka dim tadim 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 taga tadim targadam 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 dim tadim 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 tanga ta ding gedaka tanga ta ding gedaka tanga ta tik gedaka tanga ta tik gedaka tanga ta tik gedaka ding ta ding ta ding tanga ta ding targadam 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 ding ta ding ta dam ta tanga ta gedaka ta tanga ta gedaka ta tanga ta gedaka ding ta ding ta ding tanga ta gedaka ta tanga ta gedaka ta tanga ta gedaka ding ta ding taga tadik gedaka taga tadik gedaka taga tadik gedaka ding ta ding taga tadik gedaka taga tadik gedaka taga tadik gedaka ding ta ding tanga tatik gedaka tanga tatik gedaka tanga tatik gedaka ding ta ding tanga tatik gedaka tanga tatik gedaka tanga tatik gedaka ding ta ding tatin tatik takradam ding tatum tatik takradam ding taga tatim targadam ding taga tatim targadam ding tanga ta dim targadam ding tanga ta dim targadam ding dim ta dim ta dim ta dim dim ta dim ta dim ta dim
लीड़ा हो लीड़ा ढोलीड़ा 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 हम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा हम धमक बजे ढोलीड़ा हम धमक बजे झन झांझर पगमा झनके झन झन झांझर पगमा झनके खन 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 हाथ बजे चम चम बिंदी सिर पर चमके रस पर सुंदर मुख मलके फरर फरर फिर सुंदर फरेने सरर सुनर उड़े कोई रूप निरसिली कोई झेल न सदिनो आज घूमी घूमी मन पर कर दे घूमे कोई आपे कान ताली कोई आपे हाथ ताड़ी कोई हंसे कोई भजे कोई चक्कर मारे कोई हारे कोई जीते कोई पामे कोई खोवे कोई हंसे कोई रड़े एम जीवन चले आज घूमी घूमी मन पर कर दे घूमे आज घूमी घूमी मन पर कर दे घूमे आज घूमी घूमी मन पर कर दे घूमे একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই এমন একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন লাল পাহাড়ের দেশে যাবি হারিয়ার মাদল পাবি প্রেমরদের আদর পাবি রে ও নাগর একেবারে মানাইছে নাই রে হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে তুই হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে তুই হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা সুন্দরী
പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നർമ്മണതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം ഇടക്കയിൽ നിൽക്കുമൊരുക്കുമിലയിലെ कुतों कृतकृत कितों का कत जम करी का जम करी जग करी कित तक तक कुत जम करी तई जम करी जग करी कित तक ता कुत जम करी का तत कुत जम करी तई का कुत जम तत कुत जम दलम कुतों कृतकृत कितों का कुत जम तत कुत जम दलम कुतों कृतकृत कितों का कुत जम तत कुत जम दलम कुतों कृतकृत कितों ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विसे The beauty of the world lies in the diversity of its people. How's the Josh? How's the Josh? Got it? Our diversity unites us and makes us stronger together. 5, 4, 3, 2, 1.
അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ കുണ്ടലമണ്ഡിത തേജസ്വരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ മമ മാനസമൊരു പൂജാ പുഷ്പം തിരുമുൻപിലർപ്പിച്ചിടുന്നേ കൈക്കൊള്ളേണമേ കൃഷ്ണമുരാരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിപണിയും അഖിലേശ നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ
प्रभात जय गुजरात जय गुजरात जय जय गरवी गुजरात हे रमती आवे माड़ी रमती आवे मेरडी माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे कणका माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे रंगई माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे सदिरा वाली आज रमती आवे ओ मावड़ी माना होय तो जान जोरे भारी करावा तो मनारे आया ओ मावड़ी वाक्या द्वारी उगाड़े जोरे भारी करावा तो मनारे आया रमती आवे माड़ी रमती आवे मेरडी माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे कणका माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे रंगई माड़ी आज रमती आवे ये रमती आवे माड़ी रमती आवे सदिरा वाली आज रमती आवे Power Garba! Ladies and gentlemen, Kudos Bank Arena, can I hear all of you in the crowd tonight? Ganpati Bappa! Let me hear you one more time. Ganpati Bappa! Incredible, ladies and gentlemen. I believe the main man is in the building. He's in the building. We're getting word. Modi! 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 He is not far away. He's very close. There will be a time up on the screen to let you know how many more minutes we'll inch and wait until he is here. I'm excited. How are you feeling, Wayne and Arian? Under 10 minutes, ladies and gentlemen. Make sure your battery is charged. Make sure your phones are ready. This is the moment we've been waiting for. All right, before he arrives, we do have a few more cultural performances. Please sit back, enjoy, and get ready. একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই এমন একজনে ছবি আঁকে এক মনে ওই এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে ওই আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা সেই ছবিখান নষ্ট করে কোনজনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা আলো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন আজ সারানা কাল সারানা পাই যে দর্শন লাল পাহাড়ের দেশে যাবি হাবি আর মাদল পাবি প্রেম রোদের আদর পাবি রে
নাগর ও নাগর একেবারে মানাইছে নাই রে হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে তুই হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা কমলা সুন্দরী নাচে তুই হাল করিয়া বাজাও রে দোতরা সুন্দর Kudos Macarena, are you ready? Everyone in the top tier, are you ready? Alrighty, I believe he's in the building. Everybody look up at the screens now. He's on screen now. Kudos Macarena. We are now welcoming Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, and the Prime Minister of India, Narendra Modi.
Ladies and gentlemen, for those who are able, please be standing for the Australian national anthem, followed by the Indian national anthem. Australians, all let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. जनगणमनधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all for standing. What an incredible crowd. What an incredible feeling. I want to welcome the Premier of New South Wales, the Honourable Chris Minns, to the stage. Please give him a warm, warm welcome. Good evening, everybody. As Premier of New South Wales, it's my great pleasure to welcome all of you to the Kudos Frank Arena for this special event. And I, of course, particularly want to warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's largest story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita.
Friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who've made this country so great. Enjoy the night. And doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth, it is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now, we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I'm so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi.
नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलैंड, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां
लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं,
सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है
सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है, उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है,
वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है। और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा, ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है, वो देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है, इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भली भांति परिचित है। आपको याद होगा, जब मैं 2014 में यहां आया था, तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो। आपको गर्व होगा दोस्तों, आपको गर्व होगा कि पिछले 9 वर्ष में हमने करीब 50 करोड़ भारतीयों के, यानी करीब 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही हमारी सफलता, हम वहां अटकते नहीं है। इसने भारत में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने जनधन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी, JAM ट्रिनिटी बनाई है। आप सोचिए, इसे एक क्लिक पर करोड़ों देशवासियों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT संभव हुआ है। और आपको और खुशी होगी, बीते 9 वर्षों में, यह आंकड़ा भी आपको बहुत आनंद देगा, बीते 9 वर्षों में 28 लाख करोड़ रुपए, यानी 500 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी ज्यादा सीधे जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में भेजे गए। कोरोना के समय में बहुत से देशों को अपने नागरिकों को पैसे भेजने में मुश्किल आई थी, लेकिन भारत उन देशों में था जो एक क्लिक पर यह काम पलकों में कर रहा था। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। साथियों, भारत का ये डिजिटल रिवॉल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है।
इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्री और प्रॉपर्टी के पेपर्स तक जो भी सरकार इश्यू करती है वो इस डिजिटल लॉकर में जनरेट होते हैं। करीब सैकड़ों तरह के डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको फिजिकल कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस एक पासवर्ड काफी है। और इससे 15 करोड़ से ज्यादा यानी 150 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय जुड़ चुके हैं। इस तरह के कितने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हर भारतीय को पावरफुल बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। साथियों, आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज शहीदों के सरताज पंचम सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है। हमें गुरु जी के जीवन से सभी की सेवा करने शिक्षा मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने ही दसंध प्रणाली शुरू की थी। इसी प्रेरणा से कोरोना के दौरान भी
कितने ही गुरुद्वारों के लंगर ने यहां लोगों की मदद की। इसी दौर में कितने ही मंदिरों की रसोई यहां पीड़ितों के लिए खुल गई। ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए आगे आए। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस दौरान बहुत लोगों की मदद की। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। साथियों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर गहरी हो रही है। हाल में ही हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एकता साइन किया है। अनुमान है इससे दोनों के बीच ट्रेड अगले 5 वर्ष में 2 गुने से अधिक हो जाएगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हम रिजिलियंट और रिलायबल सप्लाई चेन्स का निर्माण कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बिजनेस को बल मिलेगा ही, दुनिया को भी नया विश्वास मिलेगा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। बीते वर्षों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी। एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़े हैं और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ होगा। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इससे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आना और यहां काम करना आसान होगा। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं
तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। यह अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों,